Good evening, ma'am. Good to see you back. How are you? Good evening, Rahul. I'm good, thank you. And I saw your poetry book on How Amazon. was your day? My day was very good, but I saw your poetry book on Amazon, and Yeah, it's there. yes. So you also write. Uh, you also have your YouTube channel, and you are doing so many things. I must say you are a very enthusiastic person. Okay, so but I will not praise you as you told me. Now, now we should come back to our topic. So, what's the topic for today? Today I thought that I'll teach you let structures. There can be many possibilities here, and Okay, some of you, so sorry. okay, so let's structure. So yes, please. So I'll just start with a simple one. Okay, मुझे जाने दो. let me go. But मुझे जाने दो. but I think uh, people always use let me go, not let me go. Let me go. It is kind of contraction. I don't know, but people mostly use let me go. They don't say. Actually, what happens Mm, in American accent, mhm. T is not pronounced much. Oh, If it is coming in the in between, in the end, like that. That's why. that's In why. Indians don't pronounce like that, Mm, but when you listen to them, then you will find always like they will not say interview, they will say interview kind. So that's that's why I why like. That's why I like Indian this accent. let me go. Let me go. That's why I like Indian accent. There are so many possibilities, and still you can make mistakes, and people can listen you, and uh, they can easily understand what you are saying. So okay, so first sentence was let me go, or we can also say let me go in American accent, as you were saying. And if we have to say just जाने दो, जैसा बोलते हैं ना कोई बात है तो जाने दो ना. Then how people translate this? Let me go. नहीं नहीं बात को जाने देना है ना, आपको थोड़ी ना जाने देना है. ओके, मैम आपको हेल्प करना पड़ेगा इनिशियल. नहीं हमें हमें पता होता है लेकिन कई बार आता नहीं है ना. लेट इट गो. लेट इट गो. ओ, लेट इट गो. अब इसमें बात नहीं आई कई मैम. बार इसमें बात तो आई नहीं. लेट इट गो. नहीं, अगर हम चाहेंगे अगर बात बोलना तो लेट द मैटर गो और समथिंग लाइक दैट. मैंने ये बोला कि लेट मी गो से तो मुझे जाने दो होता है ना. कोई बात अगर जाती है सीधा बोलते हैं ना, चलो चलो क्यों बहस कर रहे हो, इस बात को जाने देते हैं, तो बोलते हैं ना सीधा बोलते हैं. हम नहीं बोलते इस बात को जाने दो, हम सीधा बोलते हैं जाने दो. तो उस समय क्या होगा, उस समय हम क्या बोलेंगे. कितनी बार लगता है कि अटक गया ये, हाँ, लेट इट गो. या होने दो, यार ऐसे ही रहने होने दो. दो लेट जो इट हो बी. रहा है. लेट इट बी. द वे इट इज. लेट इट बी द वे इट इज. यस. इसी तरीके से और कोई सेंटेंस मैम. उसी तरह से जैसे इसे होने दो तो बना लिया, लेकिन बातचीत में हम क्या करते हैं, क्या तोड़ देते हैं ना, उसको छोटा कर देते हैं. उसके बाद उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, उसके बाद फंस जाते हैं. तो इसीलिए लेट इट हैपन, लेट इट गो जैसा होगा. और लेट अस गो का मतलब क्या होगा, हमें जाने दो. हमें जाने दो. और ये भी होगा कि हम चलते हैं. ओ, दो मतलब एक ही इंग्लिश का सेंटेंस है और दो मतलब है. हमें जैसा जाने. अभी हम जब अपनी बात शुरू कर रहे थे तो आपने बोला लेट्स स्टार्ट, वो क्या था, लेट्स स्टार्ट द सेशन. यस, सेशन स्टार्ट करते वो हैं. क्या है, ये लेट्स स्टार्ट क्या है. सेशन स्टार्ट करते हैं. मतलब आपको लिखने को बोलूं लेट्स स्टार्ट तो कैसे लिखेंगे आप. लेट अस स्टार्ट. हाँ लेकिन हम बोलते कैसे हैं, लेट्स हाँ. ऐसा बोलते हैं ना. यस.
तो हम उसमें apostrophe लगाते हैं, s बोलते हैं, तो Yes, ma'am. वो अस ही होता है उसमें। Yes, ma'am. अस्सी तो होता है छुपा हुआ उसमें, लेट्स Oh, स्टार्ट। yes. हाँ. तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी होगा कि लेट अस गो, प्लीज लेट अस गो नाउ, तो मतलब हमें जाने दो। हाँ. लेट्स गो ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं, दोनों में आपको ये काम आ जाएगा। हम्म. ठीक है, तो तो सेंटेंस आप बनाओ, बिकॉज़ दिस इज वेरी इजी, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, लेट मी गो, लेट मी डू दिस। देखते हैं आप okay. अच्छा बनाते हैं। अच्छा, Let me talk. Let me speak. छोटा बनाओ। Let let me speak. Uh, uh, let her talk. Let her raise the point. Uh, let him let him walk. Suppose somebody is walking and we don't want to disturb him, so we can use let him walk. And let me catch the bus. आप बहुत जल्दी में हैं और कोई जल्दी से आपका दोस्त आ गया है, आप उसको बोल रहे हैं अरे रुको रुको यार मेरे को जाने दो, ठीक है। और Can we हाँ can we make it a little longer? yes, let me call let me call my friend and let me call my friend and ask whether we are going for movie or not. Let me inform my boss that I am not coming today. uh, let me clean my shoes. Okay, so we love ourselves so much that in every sentence let me is coming. Okay, so I can try with different subjects. So let him read his novel. Let her comb her hair. uh, Okay, uh, let them let them let them play let them play volleyball. uh, Now you have to help me. let them. Yeah, you are doing it correctly, but I want to make it a little longer so that Okay. you will have practice on that, because I know that you already have a good Okay, practice on this. let me check my WhatsApp. Maybe my boss, maybe my friend have called me or has texted me. Let me check my mail. Then I should let me check my mail so that I can get uh, so that I can arrange my important mails. And let me make my routine so that I can follow it from tomorrow. And tomorrow never come. Okay, so let me. Tomorrow never dies also. Okay, yes, tomorrow never dies. Yes, let me brush my teeth. I am going on a date. Let me buy a new t-shirt. Let me buy a new t-shirt. Good one. Let me buy a new t-shirt because I am planning to meet my friend. Let me check my passport. मैं कहीं जा रहा हूँ. Let me pay my electricity bill. Let me stop you for some time. I have to speak now. Okay. Let him do what she wants, kind of. Can you do like this? Yes, yes. Let him let him do what you want. Okay, so I Let him do what he wants. let him do what he want. Let her let her speak what she want to speak. What she wants to. There She is no wants. need of Yeah. repeating the same word. Okay, let her speak. Let her read the book she want to read the book. She wants to. She wants to read the book. And Let her read the book she wants to. That's it. oh, then you can, yeah, this is very good way. Let her read the book she wants to. Oh, because we have already mentioned this in the first sentence itself. In the first part we have mentioned it. So
Girl is reading a book. Okay. Uh, Now I will change it a little bit. If we have to say कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, can you do this? he doesn't allow me to read. Or he doesn't allow me to study. अभी let तो करने दो. Allow is okay, permit is also there, but we are discussing let. Don't Okay. let it. Okay. He doesn't let me study. You. My mother does not let me play. Yeah. My boss is. My boss don't let me go outside Does not let me go outside. because it's a corona time. Uh, my mother don't let me cook. Don't let me. Oh, sorry, my mother doesn't let me cook. I think this S and ES I have to practice more, because most of the time I think it's whenever it's a third person there is a problem. It is in my mind. I know I'm making. It's just it's not there in your mouth. That's it. It will come. Don't worry. I know. So some more sentences, Okay. My but it's past now. okay. She did not let me. My father did not let me ride a bike in my childhood. And Every father is like that. the father is like that. Okay. My mother did. Uh, my mother did not let me go on a night out. And my mother did not let me wake late at the night. I did not let myself give up. Yes, It's also possible. I did not let myself give up. Yes, yes. Okay. Okay, one more. Before we end up. Now we can, ma'am, can we just We let it will. future? Yes, I was coming to that only. Oh, sorry. Okay. Sorry, I'm being patient. Oh, so am I. And, Anyways, at the so same time, he won't let me play. at the same time, very See, curious. I am also doing the same thing. I don't let you speak, you don't let me speak. I'm very curious. Anyways, See, it's like a journey where we are going on a roller coaster ride. he won't let me do that. He won't let me do Ma'am, this exactly what I want. Okay, He won't or will not. Contracted form won't. He won't let me do what I want. Okay. So my brother will not let me check his purse. Let me check his purse or wallet. क्योंकि Okay. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कुछ छिपा के रखते हैं वॉलेट में. And my mother will not let me go with my friends. And my mother will, I think not. I will not now. I will not use not. My mother will let me go with my girlfriend on a date or on a dinner. And Yeah, it can be positive also. my friend will let me will not let me speak. See, what we do first, we translate inside, no, and then it comes out. That's why it's taking too long. I think Anyways, can we have a quick revision? Yes. So let me speak. Let me study. Let me go on a bus. Let me check my WhatsApp.
and let me wash my clothes. So this is, I think, first you taught me in present tense, I think. Then I think we have to move in a past tense. It was instruction actually, kind of instructions. When you is there, but you is hidden. और उसके बाद हमने बनाया he lets me do it or he does not let me do it. In simple present. My father lets me I am Study late at night. study late at night. My mother lets me my mother lets me help me in my no, I can't use lets and help together. Lets me help her. Lets me help her. Lets me help her. Yes. Okay. In her work. Okay, so now I think with past we have made some sentences like my father didn't let me ride a bike in my childhood, and my if we make positive sentence in past, how will we do this? उन्होंने मुझे ये करने दिया या उन्होंने मुझे ये डिसाइड करने दिया या कुछ करने दिया, तो कैसे बनाएंगे? Negative you made, no, he did not let me speak. But how will we make without not? Okay, my father. Past one. My father did let me let me to go on a tuitions. No, did, no, not. Okay, did let me. Did, no, not. Okay, I will do this. Okay. The first one is simple. Let me go. Let him do his work like this. Another one is he lets me do it. वो मुझे करने देता है या she lets me do it. Okay. But if they is there, they let me do it. Accordingly, वो SES आएगा. ये तो ठीक है ना? But when we make a negative, then we he does not let me do it and they don't let me do it. You don't let me speak. ऐसा ठीक है ना? But in past, we did not let him speak. We did not let him. But we let him speak. हमने उसे बोलने दिया. We let him sit here. हमने उसे यहाँ बैठने दिया. Okay, तो हमें इसमें let him. Let past form is also let. All the third form, three forms, let. That's why it's very important to understand this. Otherwise, unnecessarily you will put did to it. Did will only come when it's negative sentence. Oh. So he let me do this and he did not let me do this. You understood? Okay. So my father lets me. No, my boss lets me finish my work. मतलब क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझे काम खत्म करने दिया. लेकिन आपने लेट्स लगा दिया. Okay, let present में है ना? Okay, my father my boss let me finish my work. काम करने दिया. और अगर काम करने देते हैं तो लेट्स मी डू इट. माय बॉस लेट्स मी डू इट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके मैम. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैम मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. शुड आई रिपीट इट वंस? No, it's okay. I think we have to make this video for viewers, so we have to make it very shorter, bit shorter. So we have to make some sentences on past. I think now आप ही करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं खिचड़ी ना कर दूं और वो लोग मतलब हमारे व्यूअर्स बोले कि किसी मतलब कितना सिखा रही हैं आप अच्छे से. नहीं होना चाहिए. हाँ, तो आप भी प्लीज. नहीं वो ठीक है. क्योंकि मैं भी इस चीज को सीख रहा हूं. Let me carry your luggage. Let me carry your luggage. Let them prepare tea for me. ये एक हो गया. दूसरा है he lets me work here. वो मुझे यहाँ काम करने देता है. They let me sleep here. और मैंने ये दोनों बोला क्योंकि एक में एस लगा रहे हैं, एक में नहीं लगा रहे, इसलिए बोला. ठीक है, क्योंकि आप की गलती हो रही है उसमें एस वाले में. He lets me do something and they let me do something. ये दोनों प्रेजेंट में है. ठीक है ना? प्रेजेंट में हम एस लगा रहे हैं ना, थर्ड पर्सन के साथ. एंड फिर उसके बाद पास्ट में he let me do this. उसने मुझे यह करने दिया. And he did not let me do this. उसने मुझे यह नहीं करने दिया.
मैं एक ही एग्जांपल ले रही हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। और फिर फ्यूचर में he will let me do it and he won't या he will not let me do it। ठीक है ना, वो मुझे ये करने देगा या वो मुझे ये नहीं करने देगा। ठीक है मैम, तो हम ठीक है, कुछ हम अपनी वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंसेस भी डाल देंगे ताकि चीज़ें और क्लियर। बहुत जरूरी है। और किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज़ अपने हमारे कमेंट में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हम अगर आप चाहते हैं कुछ पर्सनल, आपका कुछ पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर। और इससे रिगार्डिंग, इस डिस्कशन के रिगार्डिंग कुछ डाउट होगा तो जरूर आप पूछ प्लीज सकते हैं। कमेंट करिए। सो सभी व्यूअर्स मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, आपको जैसा भी है। और आप And yes, we will request that please go through the description because we always give the sentences, more sentences to practice. और एक जरा सी बात, और ये मैं इनसे बनवाती हूँ, तो ये मैं हमेशा इनसे बनवाती हूँ। तो मतलब मेरा यही कहना है कि आप किसी भी स्टेज पे हैं लाइफ की, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के, चाहे आप 50 साल के, चाहे आप 90 साल के हैं, चाहे आप 100 साल के हैं, आप कभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इच्छा चाहिए। यू कैन कोई भी भाषा और कुछ भी काम कर सकते हैं। तो बस और एक ये भी बात है कि हम इसको ये देखें कि हमको कम्युनिकेट करना सीखना है इस लैंग्वेज। पहले हमको, अगर हमें परफेक्शन भी चाहिए, हमें बहुत अच्छा भी करना है, तो शुरुआत में हमें ये नहीं सोचना चाहिए। शुरुआत में हमें देखना चाहिए कि कैसे हम कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। तो पहले हमें बोलना चाहिए, उसके बाद हम बहुत इजीली जो चाहें कर सकते हैं। और आई थिंक अब हमें इस वीडियो को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर कमिंग once again. Let us take leave now and let us do our work. Let me do my work. Okay, bye. Okay, Take care. see you.